So let's start the unboxing of Poco X3 Pro. Hello friends, so we'll be doing unboxing for the Poco X3 Pro, which is launched currently. So we'll see how does it looks and what are the features it gives us. So this is the box. Let's now open it. This is the key to insert the SIM card into our phone, which is given. Then we got one screen guard. This is the user manual for the Poco user. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोको X3 है उसमें हमें प्रोसेसर मिला है 7 नैनोमीटर का विथ फ्लैगशिप गेमिंग परफॉर्मेंस। मतलब गेमिंग के लिए 20,000 के अंदर इससे तगड़ा फ़ोन आपको नहीं मिलने वाला कहीं भी। और 6.67 का रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्स का फुल HD प्लस डिस्प्ले। मतलब ये जो देख सकते हैं आप डिस्प्ले वो फुल HD रहेगा। इस पर आप फुल HD में गेमिंग कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और 6.67 इंचेस मतलब लगभग डायगनली 17 सेंटीमीटर आप पकड़ सकते हैं। और सुपर फास्ट UFS का 3.1 का स्टोरेज टाइप है। और 240 टच सैम्पलिंग 240 हर्ट्स का टच सैम्पलिंग रेट है। मतलब आप जो देख सकते हैं एकदम फास्टली, अगर आप इस पर कुछ भी करते हैं तो एकदम फास्ट होगा। अगर आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी खोलते हैं, बंद करते हैं, यहाँ से भी इसे फेंकते हैं तो एकदम फास्ट होगा। तो इनबॉक्स ये जो हमें चार्जर दिया गया है ये है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। मतलब लगभग आपका फ़ोन 0 से 100 तक 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर दी गई और डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी। मतलब आप अगर गेमिंग करते हैं या फिर कुछ भी अगर गाना गिना सुनते हैं तो यहाँ से भी साउंड आएगा और यहाँ से भी। ये हमें गेमिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे कि फुट स्टेप राइट से आ रहे हैं या लेफ्ट से, इससे अच्छे से समझता है। और गेम टर्बो 3.0 है। मतलब अगर आप गेम कर रहे हैं और आपको अगर मैसेज आता है व्हाट्सएप पे आता है या फिर सिंपली मैसेंजर में आता है तो आप बाजू में उसका इतना सा ऐसा टैब खोल के भी देख सकते हैं। वो हमें फीचर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और गेम एकदम स्मूथ चलने वाला है। जिसके आप देख सकते हैं इसका गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम तगड़ा है। प्रोसेसर भी एकदम तगड़ा है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का। और 6 GB इसकी रैम है। ग्राफाइट ब्लैक एकदम परफेक्ट बॉडी। जैसे कि देख सकते हैं आप बाजू में अगर टच करें तो यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर बीच में टच करते हैं तो यहाँ पर आपके उंगलियों के निशान लग सकते हैं। तो इसके साथ में हमें कवर प्रोवाइड किया गया है। ये कवर का मटेरियल भी एकदम अच्छा है, एकदम बढ़िया। अगर आप इसमें इसे डाल के अगर लगभग अच्छे ऊपर से भी अगर ड्रॉप करते हैं तो इसे कुछ भी नहीं होने वाला है। So we got the key and we got a screen guard. It's a glass guard which is for the protection of the back side of our mobile phone. And this one is the user manual which is provided by the Poco for its user, that handset limited warranty and different thing, warranty card, user's advice, how to disposal of the product, SIM card tray. This all information is given in the user manual. Then let's see our mobile phone. This is covered in a plastic wrap. Let's remove it. So this is the black colored version, graphite black of the Poco X3 Pro. There is the shiny black portion of the mobile phone, and it has got display of 6.7 inches, Snapdragon 860 processor, 20 megapixel front camera. Here is a front camera which is of 20 megapixels and back camera is of 48 megapixel and 8 megapixel. It has got RAM of 6 GB and 128 GB internal storage. Then the battery, it has got a 5160 mAh, and the operating system which it has got is operating system 11. Let's start it.
This is the user interface on the first start, and the resolution it has got is 1080 into 2400 megapixels. It has been launched on the March 22, 2021, and the form factor, this is the touchscreen display, and this body is made up of polycarbonate, which is a very hard plastic, and the dimensions are 165 mm. This is the 165 mm length into 76.80 mm length and 9.40 mm length. Then the total weight of the mobile phone is 215 grams. The battery capacity is 5160. Fast charging, it has been enabled with the fast charge. Let's see the fast charger. This is the flash charge which has been provided by the Poco, and this is the 1 meter cable for the charging, which can be used with the adapter. So it has been started. It says MIUI 12, you're alone, you're alone. Let's see the display. These are the different terms and conditions which I have to agree upon. And here we are done with the startup. And the setup is complete. Let's see how the first startup looks like. The expandable storage type which has been provided by the Poco is micro SD, and the internal storage inbuilt is 128 GB of this phone, and it comes with a 2.96 octa-core processor, which is Snapdragon 860, and yes, it has got expandable storage, and it can be expandable. It can be expanded up to 1 TB, that is 1024 GB, which is a huge. Then we'll see about the camera. Let's check. Here's the camera. It is very good camera, and the number of rear cameras it has got are 4. 1, 2, 3, 4 cameras, and it has got rear autofocus, that it maintains its focus onto the object. Then it has got rear flash at this place. Then it has been provided with a fingerprint sensor with the power on off button here, and it has got Wi-Fi standards 802.11 AB, GN, SC. It has been provided with the GPS system, which is GNSS, and the Bluetooth is version 5.0 given in this mobile phone. And then a Type-C charger is provided with this, as you can see here, for the flash charge. And the number of SIMs which are supported are 2. Two number of SIMs can be inserted. Here's the SIM slot. SIM cards, or one SIM and one memory card can be used in this slot, as you can see here, vertical line. Then headphone jack of 3.5 mm is supported for the Poco X2, and the nano SIMs are supported, not a full SIM. And the system used is a global system for mobiles, GSM, and the sensor which are provided in this mobile phone are proximity sensor, then face unlock sensor, then fingerprint sensor, then also a compass. Let me show you. Here it is, the compass or magnetometer. Move it like 8
to get calibrated, and this is the compass magnetometer, which is another sensor, an accelerometer and ambient light sensor, that the sensor which detects the light modification, auto brightness, that is, it adjusts according to the light of the surrounding, that is, ambient light sensor is also provided. So this was our review for the Poco X3 Pro. Thank you for watching.